साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन लेसन थियरी आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है. उसका फिर तुम्हारा गया न्यू पब्लिक गवर्नेंस. न्यू पब्लिक गवर्नेंस एंड इमर्जिंग पैराडाइम इज कॉन्ट्रास्टेड विथ मार्केट बेस्ड अप्रोच ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. ठीक है. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तुम्हें याद है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कुछ याद है? पब्लिक चॉइस अप्रोच, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट in the course of evolution of public administration or theoretical evolution of public administration as a discipline. We discussed that new public management is comparatively of recent origin. हम लोग बोला करते थे, अब उसके बाद भी कुछ थियरीज आ गई. ठीक है. सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस किया. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट is basically inspired by market based economy, principles of market based economy. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट theoretical configuration याद करो. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट rests on the two pillars of public choice approach on the one hand, neutralism on the other. New public management was basically concerned, new public management is basically concerned with incorporating the professionalism and the ideals of private sector. That professionalism, concern for efficiency, concern for the cost consciousness. So हम लोग डिस्कस किए थे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट is inspired by market based ideology. It basically aims at incorporating the ideals of private sector like concern for efficiency, economy and effectiveness, professionalism. So it aims at incorporating those ideas from the private sector to the realm of public administration to make it more efficient and more effective. ठीक है. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हम डिस्कस किए थे कि बेस्ट इज द गवर्नमेंट विच गवर्न्स द लिस्ट. सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिपोज्ड मोर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट फोर्सेस कंपेयर टू स्टेट. ऐसा कुछ था ना, पढ़े थी. न्यू पब्लिक गवर्नेंस. तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस जो है एक तरह का इट इज काइंड ऑफ करेक्टिव्स दैट इज बीइंग अप्लाइड to the new public management. The new public management tilted scale too much in favor of the market. Too much in the favor of market. Thanks to concern for public choice approach, widening of the range of choices, the state minimalism. State minimalism. Then it's also criticized bureaucracy. Then neutralism, new method of accounting, auditing. Then the work on the auditing of the process auditing, that we should be ready for contracting out, privatization. Then structure of the organization to be more horizontal than vertical. Lot many things are there. So actually it wanted to incorporate the beauty of private sector in terms of professionalism others, to the benefit of public administration. But soon it was realized that new public management has only limited relevance. New public management has a limited relevance. Management oriented public administration may be relevant to some extent in the developed countries, but not so much in developing countries. It cannot have universal relevance. Even the market fundamentalists, they too have commented that new public management has gone too far in terms of achieving professionalism or to streamline the significance of market-based economy or something. We need an administration which is management oriented but with human face. New public management tends to focus heavily on economic aspect of the ecological setting of public administration. It deals neither with political aspect nor so much the social or cultural aspect. So public administration, unlike private administration, has a multi-dimensional contextual setting. It is not merely concerned with efficiency, economy, effectiveness in the narrow sense. It has to look after political questions. It has to take care of political questions. It has to take care of questions related to society and culture. Lot many things are there. So new public governance, it incorporates the good things of the new public management. It does not reject that, but it generally focuses on a model of governance which has that organic connectedness with the society. In the name of management, in the name of efficiency, getting a point, inspired by market-based economy, public administration should not remain confined to these areas. Public administration has to deal with tens of problems related to social, cultural, political, other aspects. So there has to be that organic connectedness between administration and society. Point clear? So there has to be visible face of the administration. Visible face of administration. Administration should be seen in the public. That public should be made to feel that administration is an integral part of the society. You need to work with them. So allow public participation in decision-making process, public accountability. Administration should go and interact with the society. So they should be made to feel what governance is. That sense of alienation has to be done away with. It is not. It means public administration has to respond multidimensionally.
Point is clear. You have to involve yourself with society, generate a lot of energy, participation, activities, and then use the same again in furtherance of the interest of society. So developing that and developing and sustaining that cyclical process. This is the spirit of new public governance. फिर अभी हम डिटेल में नहीं, यहाँ तक समझ गए बात जो हम समझा रहे हैं. So new public management to many appeared like, the good thing is that new public management aimed at giving a management oriented approach to public administration. But the scholars, the chief protagonist of new public management, the scholars, they fail to acknowledge that public administration stands on a different footing from private administration. It is not only about efficiency, effectiveness, or economy in the economic sense. It has to look after, it has to deal with the questions emanating from different spheres of life. So it is just not enough that you provide wide range of goods and services. It's not enough that you are working on cost consciousness or accounting auditing. These kind of suggestions, neoliberalism or something related to new public management, these kind of suggestions may be applicable to economic entities, corporations and companies. But public administration is not only about economic entities. Economic entities constitute a small portion of the operational domain of public administration. There are other agencies looking after different subject matters. You have to work not only for economic empowerment, you have to work for social empowerment, you have to work for cultural empowerment, political empowerment. Getting a point? New public governance, new public management and governance. There's a difference between the two. Management has a very limited zone and governance has a very wider zone. Governance incorporates the act of influencing, bringing desirable changes. नहीं समझ में बात? The word management or governance दोनों में बहुत difference है. Governance is far more a substantive, very qualitative expression. The act of influencing, the act of engaging. ठीक है? You observe, you analyze, you take action, you bring changes, you empower the society. You involve them in the process. Lot many things are there. You exercise your authority, with a lot of creativity and dynamism. Take care, with focus on productivity. Take care. All such things are being done with a human face. ठीक है? It is not just about machine. कल फ्यूचर में भी क्या होगा? कुछ समय बाद देखना, हर जगह AI अगर आ जाए तो तुम्हें क्या लगता है? लोग बहुत खुश हो जाएंगे. नहीं, एक लेवल पे एफिशिएंसी तो आ जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि लोग जो है इससे हो सकता है कि बहुत उब जाएंगे. इंसान को ऊर्जा मिलती है इंसान से बात करने में. ठीक है, थोड़ी बहुत दिल पर अच्छी बातें अच्छी लगती है. तुम देखियो जापान में क्या हुआ, इतना ज़्यादा ये तुम लोग पढ़े होगे ना, पेपर में पढ़े होगे पे. वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बीमार हो गए. रोते हैं वो कि कोई ऐसा बंदा होता, कोई ऐसा जो मेरे नाम से मेरे को पुकारता. तुम लोग भी देखोगे टीवी पे, वो हम तो देखे थे, उसमें एक महिला थी, वो चोरी करते हुए पकड़ी गई. जब उससे पूछा गया कि चोरी क्यों की, भाई तुम्हारे पास तो पैसा है, सब कुछ है, क्यों? तो उसने कहा कि मैं चाहती थी कोई मेरे नाम से मेरे को पुकारे. समझ गया? ऐसे डायरेक्टली से लिंक नहीं है, लेकिन बड़े बता दिए कि गवर्नेंस और मैनेजमेंट का फर्क है. ठीक. The anti-development thesis is a critical perspective on the traditional development models. Comment. Anti-development thesis. तुम याद ये पढ़ाए थे हम, anti-development thesis. Anti-development thesis is not against development. It is against the tendency to impose the model of development from above. It is against the tendency to look at development, development from a very narrow perspective of having some institutions to provide certain services in a particular manner, following certain rules, regulations, power, authority, jurisdiction, dispersal. Getting a point? Anti-development thesis is not against development. It says that development model of development should be designed in any country, taking into consideration the peculiarities of situation and circumstances, the historical factors, socioeconomic conditions, future anticipation. Lot many things are required to be taken into consideration, and then only you can develop model of development. Anti-development thesis is not against development. It is against the model of development which is very often imposed on a country from above by the international institutions and other agencies, based on the experiences of the governments in a world other than the one where this model is being suggested.
समझ गए? It is against that model of development. ठीक है, you take model of development very mechanically. You do not take into account the ecological setting of the development. Development is not just about some institutions. It's not about certain laws. It's not only about certain particular philosophy that has originated from a particular ecological setting. What is suitable for America, what is suitable for Britain and Germany or Europe, that may not be suitable for India or Africa or other countries. It means development as a process is deeply embedded into the distinct socio-cultural identity of that community. Development is not something which can be addressed. The case of development cannot be addressed without taking into consideration the historical factors or social, cultural, economic, political factors. Lot many things are there. Getting a point? So in every country, model of development should be developed based on the appreciation of the peculiarities of situations, circumstances prevailing in that country, the requirements of society, their needs, their aspirations, and your future anticipation. Lot many things. Coercive approach नहीं होना चाहिए. ऊपर से एंटी डेवलपमेंट थेसिस इज अबाउट दैट. ट्रेडिशनल जो तरीका जो है ये कि बस अपलन करते हैं, आप कहीं और से कुछ भी सीधा ट्रांसप्लांटेशन कर दिया. एंटी डेवलपमेंट थेसिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी, गेटिंग अ पॉइंट, एंड टूल्स एंड टेक्निक्स. ठीक है, यू कैन गो फॉर डीप कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है, देयर आर प्लेसेस यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम दिस. इट इज नॉट अगेंस्ट comparative study. Anti-development thesis is not against comparative study. It is not against comparative study, but you should not impose things from above without considering the prevailing situation, circumstance that country. Transplantation is not a good idea. Okay, you can learn from the experiences of others, but when it comes to develop a model of development, then you should focus more on the conditions prevailing in your country. Point clear? It is only in exceptional situations and circumstances sometimes it happens that an idea grows better in a place or at a place or in a mind other than the one where it actually originated. It happens sometimes, but in general, transplantation does not work. The export of administrative technology and the tools, it does not work. ठीक है, भारत का इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन जैसे काम करता है, जाओ अफगानिस्तान को सिखाओ कि आप भी बाहर से लर्न करो. बोले हम भी लर्न करना चाहते हैं, हम भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस, पूरी टीम भारत की गई, जाके वो सब बना के आ जाएगी. वहाँ पे ऐसे एक दिन चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनका माहौल अलग है. जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल AK-47 से चला रहे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पॉइंट सब चला रहे, तुम रेड लाइट जंप किए, सीधा निकाले सीधा ऊपर ही पहुंचे, मैं कहाँ आ गया, समझ गया. तो उस जगह पे तुम उसको भी टाइम लगेगा, उस सोसाइटी को बहुत इवॉल्व करना पड़ेगा. वुड्रो विल्सन इस पे भी लिखे थे. वुड्रो विल्सन ने कहा था ना कि एक्सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, इज टू बी डिस्करेज, इज नॉट गोइंग टू वर्क. उनकी बात गलत नहीं थी. क्या करोगे लेकर के? The anti-development thesis is a critical perspective on the traditional development models. Comment. So it takes development model in a very broad mannered way. Development model along with the ecological setting. So it is against the idea of imposition from above. Deep comparative study, understanding of peculiarities, you learn from the experiences of others, but finally you have to develop a model which is suitable to your country or which has a high level of instrumental worth and value for that country. ठीक है? उसके तुम्हारे civil servants should be allowed only to cast vote or to participate in the electoral process of the country. Examine. ठीक है? Civil servants, इसमें वो अप्लाई हो जाएगा तुम्हारे. Principle of objectivity, principle of neutrality. ठीक है, ये सही है. Civil servants should be allowed only to cast vote or to participate in the electoral process of the country. If civil servants go beyond that, if they start expressing their political preferences, if they become the part of the political game, so to that extent, our trust and confidence in administration, okay, will be compromised. Point is clear? So civil servants may harbor one other kind of political opinion, views. They can cast vote, but they are not supposed to participate. They are not supposed to participate in political events. They're not supposed to participate in the political process. They have to work with the political leadership
Civil servants should work in cooperation with political leadership under common legal code. They must conform to administrative ethics. They must conform to the principles of rationality, objectivity, impersonality, and anonymity. If any compromise, if they compromise with these principles, to that extent, the efficiency of public administration will certainly go down. Efficiency will be less, and public trust and confidence too will be adversely affected. That will not be good for not be so good for the society and for the polity and governance. So civil servants should be allowed to only to cast vote or to participate in the electoral process of the country. समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी ना कि सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनके पॉलिटिकल व्यूज ओपिनियन तो होंगे ही, ठीक है, तो वोट बिल्कुल करेंगे, दे आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, उनके भी राइट्स हैं, तो वो अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि वो सिविल सर्वेंट हैं, so they have to conform to these principles, because administration civil servants अगर उनको बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर वो उनको अलाउ कर दिया गया, अगर they start expressing their political preference, or they start supporting one other political party, more explicit in their expression, in their participation, to that extent popular perception of administration will be adversely affected. Then efficiency of administration will also be adversely affected. Then administrative actions will start carrying the political colors, and that will be detrimental to the larger interest of society. Okay? They are working with one other political leadership, but they have to work within the common legal code. Public administration, the civil servants, they are expected to provide stability to polity, stability to society, stability to economy, and that stability will not come if they keep changing their colors as per the changing realities, political realities of the time. They have to provide that stability, then only change can take place. क्या हो रही समझे? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोग्रेस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी अमिड चेंज एंड चेंज अमिड stability. So civil servants, your administration, institutions, agencies, they are expected to provide that stability. Okay, so that the political leadership could come up with their vision and to work for change. It does not mean that administration does not contribute to the process of change. Okay, but they have to provide, first of all, they have to provide stability to polity, to society. Getting a point? So your polity or your society or your economy, these are required to be imparted that stability. On that stable disposition only, the change, growth, development, all such things can take place. Without a stable disposition, you cannot orchestrate change. Okay? And that stability has to be provided by civil servants and administration, and that stability they cannot provide if they start expressing their political inclination, their views, opinion openly, or they go beyond the participation in the electoral process. Point clear? That the line of distinction between political leadership and administrative leadership will get blurred. So not only it will affect administration directly, its efficiency, its ability to provide stability, it will also adversely affect the trust and confidence that administration enjoys. क्या नहीं समझे? In the society. उसका तुम्हारा क्रिटिकल पाथ मेथड इज क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट इफेक्टिवली. डिस्कस क्रिटिकल, ये तुम्हारे है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, एक यूनिट है ना जिसमें PERT पर्ट भी उसके अंदर है, CPM भी है, ये तुम्हें पढ़ना था. ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड ये एक टेक्निक है मैनेजमेंट टेक्निक. क्रिटिकल पाथ मेथड, इसमें बहुत इसके वर्ड में ज़्यादा फंसना था, सिंपल है. क्रिटिकल पाथ मेथड, तो देयर इज ए प्रोजेक्ट, तुम लोग याद करो, हम तुम्हें बताए थे सबसे पहले ऊपर क्या होता है, गोल्स, और ऐसे ही होता है ना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के नीचे पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट आया. अब तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स वगैरह हैं, वो सब मीटिंग किए, ये प्रोजेक्ट है, रिंग रोड प्रोजेक्ट है, ये कोई प्रोजेक्ट अगर है, तो प्रोजेक्ट को तुम चाहोगे कि प्रोजेक्ट को बहुत एफिशिएंटली उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें. तुम्हारे गोल्स क्या होंगे? पहले तो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझो, गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो. कोई प्रोजेक्ट तुम्हें दिया गया तो सबसे पहले क्या करोगे? तुम उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझो कि प्रोजेक्ट किस संबंध में है, क्या है, नहीं है. अकॉर्डिंगली यू विल डिफाइन सम गोल्स एंड पर्पस,
and objectives. तो goals and objectives are clearly defined. अब तुम देखोगे इस goals and objectives are to be accomplished in the best possible manner. तो that project consists of, तुम identify करोगे for the accomplishment of these goals of the project or for the completion of this project. For the completion of this project, now different types of activities are required to be carried out. What are those activities which are to be carried out? Different activities or tasks. So you identify different activities and tasks. Then you identify them on the basis of priorities. You prioritize those activities and tasks. Then those activities or tasks on the basis of prioritization, they are brought in proper sequence. It is based on scientific examination. Simple. The activities and tasks are brought in proper sequence and sequence in the phased manner. That this thing has to be done in the first phase, then the second phase, the third phase, fourth phase. Then you have to provide the timeline. ठीक है, तो because you have to accomplish it with the speed and economy. Then you deal with the questions. नहीं समझ में आया? ठीक है. In how much time this first phase has to be completed? In how much time the second phase has to be completed? ठीक है. And how much resources will be required? How much budgetary allocation? So human resource, material resource. Getting one, and accordingly you plan and you organize things. ठीक है. So there is a path that you identify. When the critical path method, so it is more concerned. It is mainly concerned with identifying that sequence or developing that sequence of activities and tasks so that the activities are carried out in the phased manner, one after another, different phases with the speed and economy. Okay, or it is based on some kind of program. तुमने बहुत अच्छे से प्लान प्रोग्राम कर दिया. This is a management technique so that things are accomplished with minimum input and maximum output. ठीक है, so the beginning you know that these are the activities to be done. It brings clarity. It brings element of predictability. It facilitates evaluation from time to time. It facilitates identification of deviation, application of correctives. क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड. ठीक है. So this is a management technique. This is a management technique to accomplish or to execute any project in a systematic manner with an objective to accomplish the goal with the speed and economy. ठीक है, in a phased manner, critical path method. ऐसे और भी बहुत तरह के टेक्निक्स है. सारे टेक्निक्स वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है. अलग अलग वर्ड्स में पता होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन उसमें बस बेसिकली कंसर्न हर जगह यही होता है, एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड अप्रोच. कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया, प्रोजेक्ट जैसे सरकारी चलता था, प्रोजेक्ट चल रहा है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में ले आओ, तुम्हें पता चल जाएगा. समझ गए? जैसे अब तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. अब वो उस तरह से काम नहीं. अब तो समय के पहले नितिन गडकरी वगैरह को देखोगे, प्रोजेक्ट वगैरह वो कंप्लीट कर, उन्होंने सरकार को देखने का नज़रिया ही चेंज कर दिया. तो अब वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से सब काम करते हैं. लेकिन पहले क्या था, सरकारी व्यवस्था चल रही है, कोई प्रोजेक्ट है, आया प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट होना था, 3 साल में, वो 10-15 साल तक कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो आए बस वो फीता काट के चले गए, आज प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई. इसके बाद क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव नहीं कर रहे हैं. आपने ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया गोल्स, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप कितने टाइम पीरियड के अंदर में उसको अकॉम्प्लिश करेंगे. ठीक है, 2 साल या 2.5 साल, तो फिर 2-2.5 साल ऐसे एक लॉट में नहीं लोगे. 2.5 साल कि हम लोग गए, आप 2.5 साल बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है. 2.5 साल में आप ये अप्रॉक्सीमेट एक टाइम है. तो एक फेज में में ना, फर्स्ट फेज में आप क्या करेंगे, फर्स्ट फेज में आपकी क्या प्रायोरिटीज होगी, सेकंड फेज में किस तरह की एक्टिविटी, साइमल्टेनियस एक्शन बहुत सारा होगा ना ये. तो फर्स्ट फेज में हम लोग एक ब्रिज भी अगर तुम बना रहे हो, फ्लाईओवर भी बना रहे हो अगर, ठीक है, तो तुम एक क्रिटिकल पाथ तो डेवलप कर सकते हो. तो पहले ही तुम तय कर लोगे कि ये इसमें प्रायोरिटीज हमारी ये होगी, इस तरह के एक्शंस होंगे. उसके बाद फर्स्ट फेज ये पहला माइलस्टोन है, उसके बाद सेकंड ये है, फिर थर्ड ये है. तो तुम बिल्कुल पाथ को आइडेंटिफाई कर लिए. इससे क्या हो गया, इससे तुम्हारे बहुत ही ऑन सस्टेन बेसिस, ए वेरी डिसिप्लिन मैनर थिंग्स विल बी एग्जीक्यूटेड. इट विल बी पॉसिबल टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी. इट विल बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एनी डेविएशन, टू अप्लाई करेक्टिव्स, टू इवेल्युएट थिंग्स. क्या नहीं समझे? ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन अचीव योर गोल्स और यू कैन अकॉम्प्लिश दैट प्रोजेक्ट विद स्पीड एंड इकोनॉमी. तो स्पीड भी चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए. ठीक है, स्पीड, इकोनॉमी, क्वालिटी सब एक साथ. क्रिटिकल पाथ मेथड. देखो, ऑडिटिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग फॉल्ट्स, इट इज अबाउट ensuring the accuracy and integrity of financial information. It is not only finding fault, it is about ensuring the accuracy and integrity of financial information analyze. तुम्हें याद होगा ऑडिटिंग हम लोग CAG डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग कहते कि CAG is not merely concerned with exposing some kind of irregularity if has taken place, corruption or irregularity in discipline. CAG also there is a positive side to it. CAG also examines that how the financial informations are being managed, whether they are reliable or not,
और द लार्जर कॉन्टेक्स्ट हम लोग और भी डिस्कस किए थे जो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रहा है कि सीएजी इज नॉट मेनली कंसर्न विद करप्शन और इरेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन. द लार्जर क्वेश्चन हाउ द टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज, how the available resources have been deployed by the government, whether or not resources have been deployed with commercial prudence or that for that matter that wisdom, faithfulness and economy, whether or not money has been spent. हम लोग डिस्कस किए थे ना वो, how the resources have been deployed prudently by the government, that in the given situation like whether or not such things will lead to accomplishment of objectives or not. हम लोग और भी डिस्कस किए थे कि CAG these days is not merely concerned with examination of accounts or auditing in conventional sense. Legal audit as well as proprietary audit is going on. डिस्कस किए थे ना ये ओवरऑल डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तुम देखते हैं CAG कमेंट करते हैं लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर्मी पे भी करते हैं. ठीक है, देन देखोगे न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर कोई अगर डिजास्टर हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको भी CAG उस पर भी कमेंट करते हैं कि क्यों हुआ. तो CAG इज नॉट मेनली कंसर्न, ऑडिटिंग इज नॉट मेनली कंसर्न विद दैट. ये तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए थे. यहाँ पर तुम्हारे ऑडिटिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग फॉल्ट्स, मतलब ऑडिटिंग में दोनों ही चीज़ें हैं, केवल नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है. नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इरेगुलरिटी वगैरह वो सब भी करते हैं, इरेगुलरिटी और इनडिसिप्लिन इज एक्सपोज्ड. एंड द पॉजिटिव साइड ओवरऑल how the financial informations are being managed, how it is being organized, how it is being documented. Because the auditing, credibility of auditing or effectiveness of auditing among other things depends heavily on that information base. ठीक है, so CAG is concerned with that all, ensuring the accuracy and integrity of financial information. ठीक है, तो the system which has been deployed for the management of information, that system how it is working, what technique, method and process you are following. ठीक है, to what extent we can rely on that, all such things are matter of concern. समझ गए बात को. और ऐसे तुम्हारे एक और पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था तुम्हारे एक और अभी इस वाले पेपर में, इसके पे उसमें आया था ना, CAG पे आया था, इज नॉट ओनली कंसर्न विद लीगल ऑडिट, इज ऑल्सो कंसर्न. CAG के पे उस पे आया था कि इज नॉट मेनली कंसर्न विद लीगल ऑडिट, इज ऑल्सो कंसर्न विद प्रोप्राइटरी ऑडिट. ठीक, ऑडिटिंग इज द साइंस, पढ़े थे ना. ऑडिटिंग अनलाइक अकाउंटिंग इज अ क्वासी जुडिशियल एक्टिविटी. हम लोग डिस्कस किए थे अकाउंटिंग इज एन एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी, बट ऑडिटिंग इज अ क्वासी जुडिशियल एक्टिविटी. An auditor, after examination of accounts, he comments, he writes the judgment. डिस्कस किए थे ना ये. Auditing is the science. Auditing is the science which is concerned with systematic examination of accounts so as to verify whether or not it reflects the true financial state of affairs. इसी पे आंसर छिपा हुआ है. ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ क्या डिस्कस कर लो कि ऑडिटिंग इज द साइंस. Auditing is the science which is concerned with systematic examination of accounts so as to verify whether or not it reflects the true financial state of affairs. The accounts may or may not reflect the true financial state of affairs. So how the financial information has been gathered, where from you have collected, how the information is being managed, how it's been documented or processed. So whatever method or process is in progress, that you have deployed, whether or not these are reliable, that is also a matter of concern for auditing. Otherwise, auditing will not have much significance. Auditing will not be very much effective. जिस इंफॉर्मेशन बेस पे तुम्हें काम करना है वही इंफॉर्मेशन बेस अगर सही नहीं है तो ऑडिटिंग क्या करोगे. ठीक है, उसका तुम्हारे द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इंक्लूड इट्स इकोलॉजी. इससे तो सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एन आइसोलेटेड एंटिटी. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. It affects the society, environment, it gets affected by environment. Public administration is not only an ensemble of institutions to provide goods and services. Public administration come into existence over a period of time based on the needs and aspirations of society, their experience, their aspirations and what they expect from the government. So gradually it evolves side by side with society. Public administration is integrally connected with society. Point is clear? If your society is simple, public administration will be simple in terms of structure, in terms of functions. क्या नहीं समझे? And if society is complex, then public administration will have to respond accordingly. It will undergo that kind of structural or functional differentiation and complexity. So you cannot understand public administration, problems of public administration, strength or weakness of public administration,
its performance unless you take into account ecological setting of public administration as well, because public administration does not come from heaven, it comes from the same society. क्या नहीं समझे? It comes from the same society to which it responds in terms of goods and services. It caters to the needs of the society. So it is inextricably connected, deeply embedded in that ecological setting. It has a multi-dimensional ecological setting. The social life, economic life, political life, cultural life, then historical factors all put together define the personality of public administration. It affects and it gets affected. So administration can never be considered without ecology. If you want to bring administrative reforms will be incomplete if your administrative reforms is not based on appreciation of what kind of environmental conditions administration has been placed in. So you will have to work on the society, you will have to work on the environmental setting of public administration. Sorry. The tradition, custom, value system, the historical factors, and then only you can work on administration. The members of administration come from the same society. समझ में आया? तुम देखे थे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी दे आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड. ठीक है. ये तो हम लोग जो रिग्जियन मॉडल पढ़े थे, एफडब्ल्यू रिग्स, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें था ना कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स इकोलॉजिकल सेटिंग. A trend to adopt innovative practices in administrative ethics. A trend to adopt innovative practices in administrative ethics is gaining ground for improving public trust in government. ठीक है. Trend to adopt innovative practices in administrative ethics. Administrative ethics क्या था? Administrative ethics यही था, honesty, integrity, objectivity, rationality, impartiality, anonymity. देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, वी एक्सपेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क इन कीपिंग विद दिस एडमिनिस्ट्रेटिव, व्हाट कीपिंग, इट मीन्स administrative institutions, agencies, functionaries in their action must reflect those administrative ethics. Point clear? So administrative ethics are to be reflected, but you need innovative practices to give effect to that. So these days administration, more particularly in our country and all over the world, we are devising innovative ways, methods and techniques so as to enforce these administrative ethics in more effective manner. Information technology is playing a very important role. Point clear? So with the help of information technology, we can ensure that administration conforms to these ethics like transparency or accountability, public participation in decision making process. So administrative ethics is not just about, you talk about honesty, integrity, conformity to common legal code. Are you getting a point? When we talk about efficiency in the context of public administration, efficiency carries an ethical underpinning as well. Unlike private administration, public administration can be called efficient only when apart from economic efficiency, it also conforms to efficiency in economic sense, and then efficiency in terms of ethics, morality, administrative honesty, integrity, all such things. So public administration, unlike private administration, it stands on a different footing. So when we talk about efficiency in public administration, it carries lot many things. Efficiency is an symbol of different values. It is not only about cost consciousness or minimum input or maximum output. तो बहुत ही narrow definition होगा. तो ethical and moral underpinnings are there. Efficiency in the context of public administration, it carries ethical and moral underpinnings. Okay? And to give effect to that, to reflect that, there is a trend to make use of innovative practices. आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं. आप IT जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आप उसका बहुत ही क्रिएटिव यूज़ आप कर रहे हो लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए. आप उनके ओपिनियंस वगैरह को इन्वाइट करते हो. ठीक है, but it is not enough to provide goods and services. Ensure as far as possible, you try to ensure that wherever it is possible, that whatever you provide, it must be in keeping with the needs and aspirations of society. You need to acknowledge the diversity of preferences. Try to meet that their diverse preferences, like dislikes, as far as possible. So if possible, go and interact with the society, develop ways and means so that the people, but the administration comes up with a more vibrant, more visible, easily accessible human face. समझ में? इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं,
अभी देख रहे हो बहुत सारे स्टेट्स में, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब ऑफिसर्स को कहा जाता है कि आप समय समय पे जाएं, लोगों के साथ मिलें, डायरेक्ट इंट्रैक्शन करें। नहीं हम बहुत मैनेजमेंट ओरिएंटेड, हमारा प्रोजेक्ट सब कुछ ऑनलाइन है, सब है, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी एक कनेक्टेडनेस होना चाहिए। इसलिए आजकल ये होता है कि आजकल देख रहे हो बहुत औचक निरीक्षण खूब चल रहा है, ठीक है, जाना, फिर गांव भी जाना, गांव में जाना, लोगों से बात करना, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, हम सिटीजन से उनके साथ बातचीत करना, ठीक है। सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना जहाँ पे वो अपनी बातों को रख सके, उनके जो ग्रीवांसेज रख सकें, तुम उसे एड्रेस कर सको, ठीक है। कई तरह के रास्ते ऐसे निकाले जाएंगे। मतलब फोकस सिर्फ इस पे नहीं है कि इकोनॉमिक सेंस में एफिशिएंसी अचीव करना, फोकस इस पे भी है कि हमेशा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस उसको बिल्डअप करना। एक और पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि ये जितने इनोवेटिव प्रैक्टिसेस तुम्हारे हैं, to adopt innovative practices in administrative ethics is getting ground for improving public trust, ठीक है। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस से क्या होगा, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो है उसको एनफोर्स कर रहे हो, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सो दैट विल लीड टू बिल्डिंग अप ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। द हायर द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, easier will it be for the government to pursue reforms। ठीक है, एकदम सीधा सा इसका लिंक बनता है। हम ऐसे तुम्हें एक्सप्लेन सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर रहे, हम टॉपिक के हिसाब से डील कर रहे हैं कि जहां तक एथिक्स को कंफर्म करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, वहां तक वो पब्लिक ट्रस्ट अर्न करेगा, ठीक है। सो द लेवल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कंफर्मिटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। पॉइंट क्लियर? एंड कंफर्मिटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स वो केवल ऑनेस्टी इंटीग्रिटी तक नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। आज के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का ही हिस्सा है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित करना चाहिए जहाँ जहाँ संभव हो, और ये सब करने के लिए इनोवेटिव प्रैक्टिसेस चाहिए, ठीक है। नए नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे। मतलब यू हैव टू ब्रीज द गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, यू हैव टू रिमूव दैट सेंस ऑफ एलिनेशन ऑफ पीपल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल बहुत आम बात है, देखते हो, एक तरफ तो तुम ओपिनियन इनवाइट करते हो, वो तो चल ही रहा है, और साथ साथ आजकल ये भी है कि तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, कई बार लोग निकल जाते हैं सड़क पे आम लोगों से मिलना। अभी देखिए राजस्थान में भी चल रहा है, 2 कलेक्टर ऐसे हैं जो सफाई अभियान चला रहे हैं, ठीक है। लोगों से मिलना जुलना समय समय पे, फिर प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहर के संग, इसे चल रहा था। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन अटेम्प्ट तो लिया गया था कि चलो प्रशासन ही आपके द्वार पर आ जाए। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ये एथिक्स का हिस्सा है कि पीपल आर द रिपोजिटरी ऑफ ऑल पावर एंड अथॉरिटी, यू आर नॉट सपोज टू रन हेल्टर एंड स्कल्टर, ठीक है। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम आ रहे हैं आपसे मिलने, आप अगर नहीं आ पाते हम आएंगे, एक साथ सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो है वो सब लाना पड़े, और जिस हद तक तुम ये कर पाओगे उस हद तक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस अर्न करोगे, और जहाँ तक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होगा वहाँ तक आसान होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि रिफॉर्म्स और चेंज के लिए काम करना। आमतौर पर जितना रेजिस्टेंस तुम देखते हो, रेजिस्टेंस वो गुड गवर्नेंस के लिए कोई इनिशिएटिव तुमने लिया या गवर्नमेंट कोई भी रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तब होता है जब पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो। लोगों को लगता है कि ये चेंज और बदलाव भी जो है, ठीक है, ये सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए है या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सो लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट द गवर्नमेंट एंजॉयज, ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स डायरेक्टली the possibilities of bringing reforms without resistance or list of resistance. But that trust and confidence will come only when you conform to administrative ethics. And conformity to administrative ethics demands innovative practices. ठीक है? उसके बाद है the future of e-governance is shaped by emerging trends for making government services efficient and accessible. So the future of e-governance is shaped by emerging trends for making government services efficient and accessible. इसको ऐसे पकड़ो क्वेश्चन को, देखो इमर्जिंग ट्रेंड, अभी ट्रेंड क्या है? मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल, मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये तय करेगा कि तुम्हारे ई गवर्नेंस का क्या शेप होगा फ्यूचर में।
E-governance is used only for routine activities, deliverance of goods and services, or e-governance will be used. E-governance as a model, ठीक है, governance inspired by information technology, based on creative use of information technology. E-governance का shape क्या होगा फ्यूचर में, ये इस पे तय, ये चीज़ तय करेंगे. You have to make the governance more accessible, और क्या था, क्या, efficient, more efficient and more accessible. So you will use it for not only for non-program activities, program activities. You will use e-governance for programmed activities as well as non-programmed activities. ठीक है, not only for execution implementation of decisions, it will be used for decision making, for simulation, for proactive approach. ठीक है, proactive approach, it means you are not just responding to the present problems and situation, you are also anticipating things in future and accordingly you are preparing for the same. So e-governance, how this governance is going to be used in future, ठीक है, it is inspired by necessity to bring more efficiency and more accessibility in governance. क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से इसको, मतलब कई बार लोग गलती कर बैठेंगे, सीधा ई गवर्नेंस और सीधा, समझ गए, ई गवर्नेंस को सीधा कनेक्ट कर देंगे एफिशिएंसी है, सी गवर्नेंस इज गुड फॉर एफिशिएंसी है, सीधा पढ़ो उसको, पढ़ो क्या लिखा है. ई गवर्नेंस का क्या शेप होगा ये फ्यूचर में तय होगा इस चीज से कि हमें गवर्नेंस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है और एक्सेसिबल बनाना है. इसलिए ई गवर्नेंस को तुम यूज़ करोगे, ई गवर्नेंस को यूज़ करो, उसके पूरे मॉडल को यूज़ करो, मतलब वेरी इफेक्टिव इन क्रिएटिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ब्रीज द गैप बिटवीन पीपल एंड सोसाइटी, पीपल एंड द गवर्नमेंट. यू विल शेयर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, यू विल इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, विल एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी, यू विल इन्वाइट रेगुलर सजेशंस, यू विल वर्क ऑन द सेम. नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम टाइम यू विल इवेल्युएट, यू विल इंटरेक्ट विद सोसाइटी to understand their changing preferences. You can widen the range of choices by bringing you can widen the range of preferences. You can acknowledge different diversity of preferences, and accordingly you can widen the range of goods and services. Lot many things are there in future to be used. So e-governance may become far more sophisticated, far more complex, a tool, a technology to be made use of. ठीक है, why? Inspired by these two necessity.